हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स ताज़ा। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फिफ्थ T20 नहीं खेल पाए, मतलब बैंगलोर में बारिश हो गई। सीरीज वाज टाइड एट 2-2, बट स्टिल वी आर हियर विद यू टू डिस्कस द एंटायर सीरीज एनालिसिस, टू सी विच ऑल प्लेयर्स एक्चुअली ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। T20 वर्ल्ड कप में क्या है, हमने सारे इंडियंस को एक रेटिंग दी है। कुछ चीज़ें कॉमन रही अक्रॉस दिस सीरीज, नंबर वन बीइंग ऋषभ पंत being the captain for the first time and losing four tosses in a row। चारों टॉस हारी है इंडिया। पांचवें I में think भी fifth मतलब हारी है, also. मतलब फिफ्थ पांचवी ही हारी है, मतलब पांचवा मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। बट यस, लूजिंग ऑल टॉसेस इन द रो। इंडिया वेंट अनचेंज्ड ऑल 5 मैचेस। इंडिया वेंट अनचेंज्ड विद द प्लेइंग 11, सो दिस इज वन वेरी डिफरेंट थिंग दैट वी सी। मतलब यूजुअली देखा जाता है 2 मैच के बाद जो नहीं चल रहा है, और क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स आ रहे थे जो आईपीएल में परफॉर्म करके आते थे, जैसे उमरान मलिक थे, अर्शदीप थे, दीपक हुडा थे, ये सब बेंच पे ही बैठे रह गए। बट स्टिल आयरलैंड टूर बचा है। Coming to this tour, we're going to discuss our top performers, our top disappointments, who actually grabbed the chances for the T20 World Cup. So if you're new to the channel, do subscribe to Sports Plaza. Adiraj, let's get started. Sure with it. Uh, let's pick up the lowest ranked player from our side. We have, like Vidit mentioned, it's none other than the Indian captain, Rishabh Pant. We're scoring them out of 10. So for our viewers, Rishabh Pant has been given a first score of 4 out of 10. मुझे लगा ये इनकी It's बैटिंग पोजीशन है, मतलब फोर्थ पोजीशन पे आते हैं, बट नो, दिस इज हिज स्कोर फॉर द सीरीज। A young captain captaining India in T20 colors for the first time। दिल्ली कैपिटल्स को 2 सीजन हो गए, अब 2 सीजन से ज्यादा हो गए कैप्टन तो करते हुए। कैप्टेंसी में नए नहीं है certainly with it. तो यस। we won't really say he has the captaincy pressure. Obviously Indian टीम का कैप्टन होना versus दिल्ली का कैप्टन होना बहुत बड़ी डिफरेंस है. But again, 4 matches, just 58 runs with the highest of 29, and a strike rate which you don't accept from someone like a Rishabh Pant, just 105, which is almost on a ball. Uh, what all are your taking points from his 4 innings with it? Like, where do you think it went all wrong for him? अधिराज, नंबर वन वुड बी हिज, जैसे वो जिस तरीके से आउट हुए हैं, मतलब आप चारों डिसमिसल देखो। यू बोल टू हिम, चाहे वो स्पिनर हो या पेसर, एक स्लोअर बॉल डाले आउटसाइड द वाइड लाइन ऑफ स्टंप के बाहर। मतलब जैसे विराट कोहली का फिफ्थ सिक्स स्टंप था, इनका नाइन्थ टेंथ स्टंप है। आप डालिए, दिख रहा है कि वो ऑफ बैलेंस होके डाउन द ग्राउंड नहीं मारते हैं, ऑफ साइड पे ज़्यादा मारने की कोशिश करते हैं। एंड ही इज़ बीइंग कॉट आउट इन द सेम वे इन ऑल दीज 4 मैचेस। तो वो एक थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। आपके हिसाब से क्या खराबी रही वैसे ऋषभ पंत के साथ? सो यस, मुझे जो लगा कि ऋषभ पंत हर बार चारों मैचेस में, पांचवें मैच में एक ही बॉल खेली, बट चारों मैचेस में सेम तरीके से आउट हुए, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर इंडिया। और ये साउथ अफ्रीका के बॉलर्स थे, नॉट द बेस्ट स्पिनर्स। अगर उनको पता लग रहा है कि यार ऑफ स्टंप के बाहर सेवन्थ एथ नाइन्थ स्टंप लाइन में डालो, वाइड ऑफ स्टंप वाइड लाइन के पास, ऋषभ पंत डाउन द ग्राउंड नहीं मार रहे हैं शॉट्स। ही इज हिटिंग देम टुवर्ड्स द ऑफ साइड एंड गिविंग कैचेस। सो दिराज, व्हाट डिड यू फाइंड यूनिक अबाउट हिज डिसमिसल स्टाइल? I think, like you mentioned with it, the idea that he's been found out. I think we are seeing कि एक ही तरीके की बॉल पर आउट हो रहे हैं, तो पंत has to change something. Then he needs to probably try to be aggressive, but when the ball is like the bowlers will not bowl 6 balls outside of stump, he will get the chance, settle in, maybe play a few more balls. I think it's more important for him to not start in from ball one. We have बट people like अविराज, यू Abhishek. सी द स्ट्राइक रेट, ऐसा नहीं कि मतलब बॉल वन से मार रहे हैं, हर मैच में देखा ही गॉट इनफ बॉल्स, जो मतलब था कि ये चल ऋषभ पंत को शायद बॉल्स ना मिली हो, ऐसा नहीं है। आई थिंक इन ऑल द 4 मैचेस ही केम बिफोर द 10th ओवर, विच इज गुड। अगर एक आप नंबर 4 के प्लेयर हैं, क्योंकि आपके बाद हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक का क्वेश्चन है आपके पास। बट स्टिल हिज स्ट्राइक रेट वाज नॉट, ऐसा नहीं कि फर्स्ट बॉल से मार रहे थे, इनफैक्ट ही टुक हिज टाइम इन ऑल द मैचेस। और कुछ कुछ में 7 ऑफ 9, मतलब फर्स्ट इनिंग्स में 29 मारे थे एंड देन जस्ट डाइड ऑफ। I think I agree. So, like, with the second point would be here to he has to wait, slightly be more patient about waiting for the bad balls. I think एक concept रहता है कि आप हर बॉल पे ना मारे, आपको बुरी बॉल मिलेगी, एक बॉलर 6 में से आपको एक बॉल देगा ना, आप उसको टारगेट करें इंस्टेड ऑफ ट्राइंग कि आप हर बॉल पर रन बनाएं. यू हैव लाइक यू सेड, एक क्वेश्चन है हार्दिक और डीके आएंगे इसके बाद और वो रन बना सकते हैं क्विकली. So I think it's just about patience, and he will obviously come back stronger in the next series. He's gotten his chances. People are already talking about replacing him with like the likes of DK because there is no other place left for DK. But we'll come back to that later on when we talk about DK. So yeah, overall disappointing series for him. You expect a lot more out of a young Rishabh Pant, and he's done well for Delhi in the previous games. But
definitely the worst player of the Indian 11 for this series for me. एक बात जो अच्छी रही was that India did not lose the series. An amazing comeback. तो थोड़ा credit ऋषभ पंत the captain को जाएगा because India was 2-0 down and you don't have your Rohit Sharma, Virat Kohli, Bumrah in the squad and then Yep. India winning the third and fourth T20. फिफ्थ भी बैंगलोर में मतलब पंत ने लास्ट में इंडिया श्रीलंका के टेस्ट मैच में यहाँ पे 50 मारी थी तो लग रहा था कि शायद बैंगलोर में फॉर्म में आ जाए बट मैच ही कैंसिल हो गया. Coming to our second lowest performer for the Indian team, Akshar Patel, two Delhi Capital boys. I feel अक्षर पटेल के लिए इन द एब्सेंस ऑफ जडेजा एक बहुत अच्छा वो था कि अपने आप को थर्ड जो Opportunity. ऑलराउंडर है उसकी अपॉर्चुनिटी को प्रूव करने का बट नहीं मतलब तीन ही विकेट लिए इकोनॉमी कुछ बहुत ग्रेट नहीं. अधिराज व्हाट डू यू थिंक ऑफ अक्षर पटेल्स बॉलिंग एंड व्हाट वेंट रॉन्ग? I think with it, like you said, कि with Jadeja not being in the squad, we know कि अक्षर इसके natural replacement है. मतलब like for like हैं बिल्कुल, batting a good batsman, a left arm bowler. So you expect something similar to Jadeja. Obviously, you can't compare them both, but इवन तो अक्षर के साथ ही रहता है कि वो इतने विकेट्स नहीं लेते मेरे को लगता है, बट सिमिलैरिटी में जड्डू है कि वो इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं. अगर आप देखें कि इस सीरीज में 8 के ऊपर की इकोनॉमी रही है, जो मेरे को लगता है अगर यही इकोनॉमी अगर 6 के अराउंड होते और विकेट नहीं लिए होते तो आप कंटेन कर रहे हैं मिड ओवर्स में बैट्समैन को. आई थिंक वहां पर थोड़ा है कि विकेट नहीं मिल रहे हैं, वो उनके साथ रहता है, लेकिन उसके साथ साथ रन थोड़े ज्यादा लीक कर रहे हैं. ऑब्वियसली आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे इशू ये भी रहेगा कि वो अपने 4 ओवर हर मैच में नहीं डालेंगे, शायद हार्दिक आके कुछ ओवर डालेंगे तो वो शेयर ऑफ कोटा नहीं मिलता, रिदम नहीं नहीं आ पाते. बट ओवरऑल आई थिंक इवन एज अ बैट्समैन आई थिंक ही स्कोर्ड अबाउट 20-25 रन. ज्यादा बॉल्स नहीं मिली, लेकिन जब भी चांस मिला यू एक्सपेक्ट हिम टू हिट अ फ्यू बिग बाउंड्रीज, जो वो दिल्ली के लिए करते आए हैं और वो आईपीएल में करते हैं दिल्ली के लिए सेम चीज. तो ओवरऑल विद द बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों से थोड़ा सा निराश रहे अबाउट अक्षर पटेल. एंड वी ऑल नो कि जडेजा के वापस आते ही he does not have a place in the squad. But again, good opportunity थी आज एटलीस्ट सेटल डाउन किया. अगर जडेजा को कुछ भी होता है तो अक्षर कम्स इन एज ए नेचुरल रिप्लेसमेंट, बट डिसअपॉइंटेड कि उन्होंने नहीं लिया मतलब इस अपॉर्चुनिटी को. यस यू हैव मैनी स्पिनिंग ऑलराउंडर्स. जडेजा है, अक्षर है, वॉशिंगटन सुंदर है, दीपक हुडा मतलब स्पिनर नहीं है बट स्टिल हैड अ वेरी गुड आईपीएल, डिड नॉट गेट अ गेम. कमिंग टू माई पर्सनल मतलब जिससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड रहा वो थे ऋतुराज गायकवाड़. आईपीएल आफ्टर 2021 ऑरेंज कैप विनर, आईपीएल 2022 वाज नॉट द बेस्ट ऑफ आईपीएल्स फॉर हिम. एंड ये मैच मतलब ये सीरीज अगर देखोगे 5 इनिंग्स लगातार मिली एज एन ओपनर, ही कुड हैव एक्चुअली प्रूव्ड हिज चांस क्योंकि देखो आप शिखर धवन को तो इंडिया भारी कर चुकी है. कंसिडर ही नहीं करती. श्रीलंका में कैप्टन बनाया फिर स्क्वाड में नहीं रखा, यहाँ इस स्क्वाड में नहीं रखा, आयरलैंड स्क्वाड में भी नहीं है. And तो this is इफ यू after he वांट scored a good 500, 450 plus IPL राइट again. एंड दैट्स कंसिस्टेंट. मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ बट ईशान किशन ने वो कमी पूरी कर दी है लेफ्टी. एंड गायकवाड़ और ईशान किशन में से दोनों में से एक जन के पास बहुत अच्छा चांस था. ईशान किशन ने मतलब अपॉर्चुनिटी पकड़ ली है, गायकवाड़ को नहीं पकड़ पाए. Although Gaikwad did score a 50 in the third T20 which India won, but overall a very disappointing continuing from IPL जैसे था कि expectations थी. यहाँ थोड़ा अच्छा ये 5 मैच चले जाते जैसे 200-220 रन बना देते तो his name would have been up there in the T20 World Cup squad, but I think it's over now for Gaikwad at least for this year. What do you think, Adiraj? आई थिंक सर्टनली विद इट. वैसे भी ओपनर्स की बहुत ज़्यादा ही ओपनर्स इंडिया के पास, तो गायकवाड का टीम में आना भी बड़ी बात थी. ही गॉट द अपॉर्चुनिटी. अगर लाइक आपने कहा अगर 5 मैचेस में वो 200-220 रन बना देते तो वो एटलीस्ट चांस होता कि स्क्वाड में आ जाएं. टीम में सर्टनली शायद अभी भी नहीं खेलते, बट लाइक यू सेड डिसअपॉइंटेड. हर मैच में इनिंग्स में अपॉर्चुनिटी मिली एंड ही जस्ट डिडंट परफॉर्म वेल. वन गुड 50 प्लस स्कोर, बट ही हैड टू बी कंसिस्टेंट टू गेट हिमसेल्फ इन द स्क्वाड. बिल्कुल तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ इन पर्टिकुलर गायकवाड़ से. कमिंग टू अनदर प्लेयर जिसके पास एक चांस था मतलब श्रेयस या सूर्य कुमार में से एक ही जना प्लेइंग 11 में आता है. सूर्य कुमार हैज़ बीन इंजर्ड बट स्टिल एवरीवन इज सेइंग सूर्य कुमार वॉक्स इन द स्क्वाड. ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप है, सबको पता है श्रेयस अय्यर स्ट्रगल्स अगेंस्ट पेस. स्पिन के अगेंस्ट श्रेयस अय्यर इज़ वेरी वेरी गुड बट जैसी पेस आती है देखा सबने देख लिया. अब तो मतलब आईपीएल से देख रहे हैं एक स्टेप लेफ्ट राइट और एक स्लैप मतलब. और ही इज बीन हिटिंग दो स्लैप्स, ऐसा नहीं कि वो उससे आउट हो रहे हैं बट काफ़ी अनयूजुअल शॉट है. एंड ही नीड्स टू बेटर हिज स्ट्राइक रेट, इम्प्रूव हिज गेम अगेंस्ट पेस टू बी इन द प्लेइंग 11 मतलब स्क्वाड में डेफिनेटली होंगे फॉर द वर्ल्ड कप स्क्वाड. पर स्काई और श्रेयस में से कोई किसी से भी पूछ लो किसको आप प्लेइंग 11 में रखोगे, सब स्काई का नाम ले रहे हैं धीराज. Yeah, I think certainly again another player who had the opportunity to I think make his place that 4-5. And We have a before lot the of competition. IPL against Sri Lanka, he went 3 innings not out. टेस्ट मैच में मारे, T20 में मारे, 200 प्लस रन मारे थे 3 innings में. एंड डिसअपॉइंटिंग सीरीज फॉर ईयर नाउ.
Yeah, I think I'll probably certainly be in the squad still again. But like you Yes, mentioned, with Surya coming back, and if anyone, if we have that place for number four, I think Surya jumps back right in, just based on the previous innings and how he's played his form, obviously before the injury. And again, opportunity for Ayer was there. You know, get a few runs under his belly like he'd done previously. But again, this series was very important. They've gotten the opportunity with South Africa coming to India. Again, disappointed with how he's played. The strike rate is not up at all. He's not being able to accelerate the way he used to do in the IPL previously. That शुरू में धीरे खेल रहे हैं लेकिन फिर 23 रन बनाते हैं तो वो बड़ी innings नहीं आ पाई. I think that's more important and that's where it's lacking. We needed him to score one big innings, I think. एब्सोल्युटली कमिंग टू काफ़ी हमने बैटर्स की बात की है कमिंग टू वन बॉलर इन वन मैच ही पिक्ड अप दीज 4 विकेट्स बट अपार्ट फ्रॉम दैट वेंट विकेटलेस इकोनॉमी यस और अवेश खान मेरे T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में डेफिनेटली हैं बट वी गिविंग हिम अ 7.5 एंड वी आर सीइंग आफ्टर अक्षर पटेल Avesh Khan was the second weakest bowler in this lineup. Yes, Adhiraj. I think I won't call him the second weakest with it. Think of him, he's debuting for Team India actually. I mean, like he Yeah. is a youngster who's coming back off a good IPL, has taken wickets in the IPL, and like a few other players in the squad. But he went wicketless in the first three games actually, which was he was bowling actually well. His economy is down to 7, which is very good in a T20 format. So he was bowling well. Was probably getting like little bit unlucky with not getting the wickets. But again, fourth game, brilliant bowling, got 4 wickets. That's like a dream for anyone. So I'm not disappointed by him. Obviously, he could have had a few more wickets into that column, and that makes him like maybe a 2 or 3 more wickets, and he had a great tournament. I think so. It's just that that wicket columns in. If he had taken like one wicket in the first 3 games, also, I think that would have completely changed. So happy with the way he's played, and I certainly see him in the squad as well, bowling at good 140 plus speeds. I think he's done well for himself. Yes, definitely. Coming to another bowler, I would not say he had a bad series, but coming from his IPL form, पर्पल कैप विनर, हाईएस्ट विकेट टेकर, इंडिया के लीड स्पिनर, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी. फर्स्ट मैच में अपना कोटा ऑफ ओवर्स नहीं बोल कर पाए, बट ही केम बैक वेरी वेल इन द थर्ड एंड फोर्थ T20. बट बिकॉज थोड़ा सा चहल हिमसेल्फ सेड कि फर्स्ट T20s में बहुत फास्ट डाल रहे थे, ज़्यादा फ्लाइट नहीं दे रहे थे, बॉल की सीम अलग तरीके से पकड़ रहे थे, एंड ही चेंज दैट इन द थर्ड T20. So we've given him a 7.5 score only because of what happened in the first two matches and India lost those two matches knowing that India की main bowling lineup नहीं खेल रही है तो चहल के ऊपर और added responsibility थी. That's why I'd like to give Chahal 7.5 only because he was coming of such great form. Adiraj, coming to the next player, the Ireland tour captain Hardik Pandya. Surely World Cup squad, surely playing 11. But are you happy with how he continued his form after IPL? I think happy with the way he's played because we saw in the few games, the way when he came out to bat, he did not have that freedom. He came out to bat when India was in trouble in a few games, so he had to make that partnership with DK. But again, in the first few games, actually, when they had lesser number of balls, he actually went to attack. I think he scored a 30 of some 17 balls in the first game, and then went Yes. on to score quickly. So that strike rate is still up at 150 And he plus, which is refused a very good. single to Dinesh Karthik. वो first T20 Certainly. की highlight हो गई थी. Yeah, certainly, obviously, but then again, I think the only reason why we've given him an 8 and probably not an 8.5 is because of that bowling. He's bowled 5 overs in the series. He's given 60 runs in those 5 overs. Even as a sixth bowler, you don't want him to give 12 an over. Maybe an 8 to 10 is fine if you're giving 2 overs, give 20 runs. Maybe that's still acceptable. But to give like 12 runs an over in these 5 games, I think that's where the bowling is still lacking. Maybe not complete fitness, and no wickets obviously in the series for Hardik. So that is the reason why we've rated him 8. And I think if that improves, I think he's done very well with the bat to keep his position as a batsman in the squad. Yes, last World Cup also he was playing as a pure batter. This time थोड़ी bowling कर रहे हैं. I agree that bowling not up to the mark थोड़ा better कर सकते हैं. That's why he is not a top performer. He's been given 8, which is one of the highest scores. Coming to another player who is so good at the death, Harshal Patel, highest wicket taker for this series for both India and South Africa. 7 wickets, 7.2 economy. And you see the overs he bowls. He bowls the sixth over in the power play, bowls at the death, getting those crucial slower balls. And he's the only bowler who dismissed Miller. First two T20s, Miller went undismissed. Third and fourth T20, Harshal Patel dismissed Miller, and India won those T20s. So, Adhiraj, Harshal Patel, do you see him in the World Cup playing 11 along with Bumrah and Shami, or is it Bhuvneshwar? That it's going to be a very tough decision because I do see him in the squad for sure. I mean, there's no doubt that he's not in the No, squad. no, Obviously, वो he's making the squad. डाउट ही नहीं है सर.
Yeah, so I think the point is how India goes with that bowling lineup. Do they want a slow finishing? Because Bumrah obviously certainly bowls two in the death. It's about the other two because Bhuvi actually gives you the option of bowling up and at the death. Shami does not give you that option. Shami only bowls at the top. So it will be interesting to see how do India go with four bowlers in the first sense, and if not, it's going to be a very tough ask basically. So I do see him in the squad. I think I would want to see him in the playing 11 as well. So one of them, Bhuvi or Shami, has to miss out according to me. So and a great series I for him think this it's series. Bumrah, Shami, and Harshal Patel for me. But coming to the most talked about player, the best comeback that we've seen so far, Dinesh Karthik. 16 years after, he wins a player of the match in 2006, 2022, first T20 international half century. And IPL जैसा रहा, you can look at the strike rate, highest strike rate for India, 158 plus. And winning that one match, मतलब ज़्यादा balls मिलती नहीं as a finisher. The score may seem कि only 92 runs. But still, I would definitely see Dinesh Karthik on that plane to Australia. Playing 11 थोड़ा doubt है, as you said, Adhiraj, कि some players are saying Rishabh Pant खेले या DK खेले. I feel Rishabh Pant will start, but if he struggles, it'll be DK's chance. He's done everything he can to walk into that playing 11. Now, coming to the player of the series, Adhiraj Bhuvneshwar Kumar. He was adjudged the player of the series. हमारे लिए दो प्लेयर्स हैं जिन्होंने हाई स्कोर रहे हैं, दोनों को 9 पॉइंट दिए हमने, ईशान किशन एंड भुवनेश्वर. वील टॉक अबाउट भुवनेश्वर फर्स्ट. I think we all know what he brings to the table with it. That experience is just unbelievable. And with the white ball and the red ball, how we know he's been so good with the red ball. But again, with the white ball to swing that ball so early in the first few overs that he gets, he's just been too good. And it's very tough for India to select between him and Shami as an opener. But that experience will definitely be helping the team Indian side. And another amazing series for him. Takes 6 wickets with an economy of just six bowling in the power play. That's insane for any bowler. Very happy with his performance, and it's going to be interesting to see who we pick up in that playing 11 in the T20 World Cup. डेफिनेटली एक मैच में भुवनेश्वर ने 4 विकेट लिए थे एंड इंडिया लॉस्ट दैट T20, बट स्टिल हिज इकोनॉमी ऑफ 6 इज सिंपली अमेजिंग. कमिंग टू माय पर्सनल प्लेयर ऑफ द सीरीज, आई वुड से ईशान किशन. And with Shikhar Dhawan not in contention, I think Ishan Kishan is 100% making to the squad. Playing 11 नहीं है, बिल्कुल नहीं है. KL Rahul, Rohit Sharma will open. But yes, जो एक थर्ड बैकअप ओपनर का स्पॉट था, जो लग रहा था कि आईपीएल के बाद किशन ने कुछ नहीं किया है, हाईएस्ट स्कोरर फॉर मुंबई स्टिल, वो प्राइस टैग, and he did everything he could. All 5 matches got them good starts. So I'd see Ishan Kishan surely on the plane, but not in the squad, not in the playing 11. But surely he's done everything to reach the squad. Coming to South Africa, very very quickly, what went right for them, what didn't go wrong. सो साउथ अफ्रीका के जो कंसर्न्स हमारे हिसाब से हैं, वो थे ओपनर कभी सेटल नहीं हुए. बबूमा इंजर हो गए, क्विंटन इंजर हो गए, हेंड्रिक्स चले नहीं. सो दैट इज़ वन कंसर्न. नंबर 3 पे मार्करम वॉज नॉट फिट, बट विद मार्करम कमिंग इन दिस साइड इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. अभी प्रिटोरियस नंबर 3 पे थे, सो दैट इज़ इशू. शम्जी लास्ट ईयर तक नंबर 1 T20 बॉलर थे, जस्ट गॉट 1 विकेट इन द 4 T20s that he bowled. Adiraj, coming to the positives, the middle order for South Africa, please run us through this. Yeah, certainly. I think with Rasi Van Edison scoring almost 100 runs in 4 innings. Same with Klaasen. Obviously, was brilliant in the way he's played. In, I think two of the innings he was very good, getting Yeah. those big runs. And then again, Miller has just been outstanding. Amazing IPL for him, and he's just continuing that form. So that middle order looks very strong for South Africa. Again, they just need to figure out who opens with Quinton mostly. Quinton being fit, It'll and be then that Bavuma. number Bavuma is the captain, so yeah, so with Bahuma and Quinton, and like you said, at three we have Markram. Markram coming back into the squad. So I think the batting lineup will be settled for South Africa, and we all know the bowling is as good as they are. So like And people all are good saying for South Africa. Duplessis might walk in, so that'll be one very strong South African team. I don't see him happening with But South on Africa that board. note, Just not. thank you so much, everyone. Thank you for tuning in. Do subscribe to Sports.